अच्छा, metaphysical poetry क्या चीज़ है? Metaphysical poetry, and it is very important topic in English literature. Especially John Donne is famous for metaphysical poetry. ठीक है, उसके जो स्टाइल ऑफ पोट्री है, जो उसकी थीम्स है, वो सारी क्या है? मेटाफिजिक्स है. टुडे आई विल briefly explain that what is metaphysical and metaphysical poetry, and what are the themes included in, and what is the tone inside the metaphysical poetry. Okay, so first of all, we will take a start from metaphysics, that what is metaphysics and what is metaphysical poetry. Okay, first of all, if you are new to channel, kindly channel को subscribe जरूर करें और बेल का आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह informative वीडियो वक्त पे मिल जाए. Okay, before this video, I also uploaded on my channel's English history. Okay, from the Middle English to modern period. Okay, all these history period are I uploaded on my channel, so you can watch it. Apart from this, you can also watch linguistic topics, the basic concept of linguistic, which are I already uploaded on my channel. Okay, so let's take it from metaphysics. That what is metaphysics? So metaphysics, meta means what? Meta means after. Okay, so physical is physical. So after physical. Okay, so look into this is something very religious type of poetry is always you can say that. What is after physicals? Like the heavenly bodies, like the body of gods, like angels, etc. Okay, that we didn't see, we do not see. Sorry. Okay, so how they come into beings. So these things are studied in metaphysical poetry beyond the physical. Okay, for example, you can't see the ruh. Okay, you can't see the souls. So this question is asked in metaphysical poetry. Okay, so deals with question that can't be explained by science. Metaphysics की काम क्या है? Metaphysical उन questions को, इन सवालों को explain करता है जो साइंस ने अभी तक explain नहीं किया है. ठीक है, उनके बारे में metaphysics हमें बताता है कि सोल क्या है, गॉड क्या है, एंजल्स क्या है. ठीक है, इन सब चीजें हमें मेटाफिजिक्स बताते हैं. So these are some questions that metaphysics ask. First is there a god? Okay, existence of god के बारे में पूछा था कि god मौजूद है. ठीक है. Second, what is my place in nature? Human natures. What is my place in natures? हमारा value nature के अंदर क्या है? Apart from this, what is my reason of existence? What is the reason of my existence? क्या वजह है हमारे existence? यहाँ की वजह क्या है? हम किस लिए पैदा की गई है? तो these questions are asked by metaphysics. Okay. अच्छा, अब आते हैं मेटाफिजिकल पोट्री की तरफ की. मेटाफिजिकल पोट्री क्या है? अब तो हमने मेटाफिजिक्स को डिस्कस किया कि after the physical, the question which can't be explained by the science, it is explained by metaphysics. Okay, so and what are discussed in metaphysical poetry? Okay, so we write some characteristic of metaphysical poetry. That what is the characteristic of metaphysical poetry? The first one, you can say that it is a group of poems that share common characteristics. एक ग्रुप ऑफ फोर्थ थी, स्पेशली उसके जो फाउंडर या उसकी लीडर है वो कौन है? वो जॉन डन है. ठीक है, तो उसने जो पोएम्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसके जो poems है जो especially included in the BS courses and university levels, we will discuss that. Okay, so John Donne is considered as the founder and is the leader of metaphysical poetry. So they share some common characteristics in their poems. Okay, so what are that characteristic and what are the themes that will be explained in this video? Tell. Okay, so they are highly intellectualized. ये पोएम जब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज पोएम्स वहाँ पर है. ठीक है, बहुत इंटेलेक्ट वहाँ पर यूज़ किया है, बहुत loaded with meanings. Okay, their every poem is loaded with meaning. Okay, apart from this, use frequent paradox that contain extremely complicated thought. Apart from this, they discuss some very complicated thought that can't be a common man can't think about that or can't understand that what he says the poet. Okay, they use paradoxes that something which is means something else, that are some opposite ideas are there.
For example, child is the father of man. So such type of things used by the metaphysical poets. Okay, paradoxical statements are there. People think that they are irreligious, they are something against religious, but actually the intellect and the intelligence of that poet are can't be understand by the common people. जो उसकी intelligent है, जो उसकी intellectual power है उन poets का, metaphysical poets का, वो common means की understanding नहीं होता, इसलिए लोग समझते हैं कि गैर मजहबी है या कोई और चीज़ को समझते हैं. Apart from this, अच्छा जो ये मेटाफिजिकल जो टर्म्स है ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ किसने यूज़ किया था, ये था सैमुअल जॉनसन, एक क्रिटिक भी है, ठीक है. उसने एक बुक लिखा था, उसके अंदर उसने ये लफ्ज लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स. तो द फर्स्ट टाइम मेटाफिजिक्स वाज मेटाफिजिकल पोएट्री यूज्ड बाय सैमुअल जॉनसन. अच्छा, अब आते हैं टॉपिक एंड थीम की तरफ की मेटाफिजिकल पोएट्री में थीम्स एंड टॉपिक्स क्या होते हैं, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक एंड थीम क्या होती है, हेवीली इंटेलेक्चुअलाइज फिलोसॉफिकल कंसेप्शंस. दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल कंसेप्शन आर यूज्ड. These are the topic of metaphysical poetry. Philosophy, ठीक है, और intellectuals के बारे में वो क्या करते हैं, ज़्यादातर उसके टॉपिक ये होते हैं जो उसकी पोट्री होते हैं, ठीक है. सेकंड क्या होते हैं, profound areas of experience, especially love, human relation with God. ये मेटाफिजिकल पोट्री की जो एक्सपीरियंस होते हैं लव के बारे में, रोमांटिक के बारे में, या मैन रिलेशन विद गॉड के बारे में, बहुत ज़्यादा प्रोपाउंड, बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत डीप होता है. इसलिए कि जब वो अपने पोएम्स को डिस्कस करती है, जब वो पोएम्स में लव के बारे में या रोमांटिक सीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप बहुत हैरान हो जाए कि किस तरह की लोग हैं. ये रोमांटिक पोइट्री से भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है. रोमांटिक पोइट्री ज़्यादातर तो बस सैम्पल लैंग्वेज में बताती है, लेकिन ये जो पोइट्स है ये बिल्कुल डिफरेंट है उनसे भी, ठीक है. अच्छा, प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन. प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन भी एक टॉपिक इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है. ये थीम्स भी होता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो भी इसके अंदर डिस्कस करते हैं. Justice in corrupt world. Justice in corrupt world. Okay, it might be in different corruptions in state affairs and the politic, etc. So these are the main topics of what of metaphysical poetry. Let's come to the tone and structure. क्या होते हैं tone and structure metaphysical poetry की, तो वो क्या होता है, it can be harsh, witty, lucid. Lucid होता है, witty and lucid, ठीक है, या harsh statement, सॉरी टोन इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है, डिफरेंट टोन्स. यूज ऑर्डिनरी स्पीच, ऑर्डिनरी स्पीच मिक्स विद फन पैराडॉक्सिस. फन होता है, पैराडॉक्सिस होते हैं, कंसीट्स होते हैं, तो इसी वजह से जो उसके टोन है वो बहुत ज़्यादा डीप इन मीनिंग में होता है. एग्जाम्पल को आप देखें, जॉर्ज हर्बर्ट सेज ही कंपेयर्स गॉड जेनरसिटी टू ए बॉटल ऑफ टीयर्स. God generously compares with bottle of tears. George Herbert. Again, this is a conceit here. Often presented as argument. ज़्यादातर argument इसके अंदर मौजूद होते हैं. तो let's see George Herbert in his poem Praise. He compares God generosity to a bottle of tears. So this is conceit and paradox statements. So very important.